रमज़ान मुबारक एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ शेख मोहम्मद सेंटर ऑफ कल्चर अंडरस्टैंडिंग, जहाँ हम इमरात की पतली सी गलियों से गुज़रते हुए पुराने घर देखते हुए उनके घर के अंदर जाएंगे, जहाँ पे हमें वो वेलकम करेंगे और इमराती कल्चर के बारे में बताएंगे। और फिर उसके बाद होगी इमराती कल्चर इफ्तार के बाद मस्जिद में जाएंगे। मस्जिद में जो टूरिस्ट हैं हमारे साथ उनको हम नमाज़ वगैरह बताएंगे और फिर वापस घर पे आएंगे, कुछ पेंटिंग वगैरह देखेंगे और पेंटिंग देखने के बाद हम फिर डेज़र्ट वगैरह ट्राई करेंगे इमराती, और उसके बाद फिर लास्ट में कैलीग्राफी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हाल चाल। मैं मैक्सोरडन इरफान शाह। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपका भाई जो है वो दुबई में आ चुका है वापस। रमज़ान शुरू है, मैं अल-फहीदी में आया हूँ, शेख मोहम्मद कल्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि इमराती इफ्तार कैसे होता है, उनका कल्चर क्या है। मुझे भी नहीं पता, मैं भी सीखूँगा और साथ साथ में आपको भी दिखाता जाऊँगा। तो ये वीडियो जो है कंप्लीट देखनी है और आप लोगों ने बताना है कि कैसी लगेगी ये वीडियो। तो चले मेरे साथ, मैं आपको भी लेके जाता हूँ। और ये हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे वेटिंग रूम में सब कुछ टूरिस्ट लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो बाकी टूरिस्ट लोगों के साथ हम भी चल पड़े हैं इमरात की गलियों में, पुरानी इमरात में, जहाँ पे रॉयल फैमिली पहले अपनी लाइफ स्पेंड कर चुकी है यहाँ पे, जिसमें शेख मोहम्मद वगैरह की फ़ैमिली भी यहाँ पे होती थी। और ये बहुत ही पुरानी सी गलियाँ हैं दुबई की अल-फहीदी में। पहले यहाँ के जो फैमिली, रॉयल फैमिली यहाँ पे रह चुकी थी, उनका स्ट्रीट जो है बिल्कुल ऐसे ही होता है। और काफ़ी सारे यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी एक टूरिस्ट पार्टी आई हुई है और यहाँ पे भी इनको कुछ सिखाया जा रहा है, मतलब अलग अलग एक प्रोग्राम ही इनका यहाँ पे होता है। अस्सलाम वालेकुम। और ये गुड। सो ये रहा हमारा दस्तरख्वां यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सब दस्तरख्वां है यहाँ पे। यहाँ पे एक इमराती कल्चर में जो है आज इफ्तारी होगी स्पेशल। So welcome everyone. Welcome to the Sheikh Mohammed Center for Culture and Understanding. My name is Shah, and in the center we have something that says open doors, open minds. Assalamu alaikum, my name is Yusuf Al-Mannai. I'm a culture presenter at Sheikh Mohammed Rashid Center for Culture Understanding. We would like to welcome you in our majlis, or as we call it in our dialogue, Milas. Milas is basically the place, it's the largest area at the house where we host our guests, we welcome them and we provide for them some refreshment and some drinks as well. बताया कि हमारे दरवाज़े जो हैं और हमारा माइंड जो है आपके लिए बिल्कुल ओपन है, आप कभी भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। In Ramadan, we break our fast at the 4th prayer of the day. So when we hear the call of the prayer, we start to break our fast. We break our fast usually with a very light things such as the date and some water. Alright, you can break your fast now. In our majlis, we provide also some welcoming drink for the guest after we break the fast. We give them qahwa, or it is the Arabic coffee. Qahwa is basically some light drink. We make it with cardamom, rose water, and some saffron. And we don't fill it all the way to the top. We provide for the guest half of the cup. It is a sign back in days, if they fill the cup for the person all the way to the top, it's a diplomatic sign to say you're not welcome over here. And we don't want to give this sign for our guest. That's why we fill the cup for the guest just to the middle. तो आप लोग जो देख रहे हैं छोटी सी प्याली या छोटा सा कप जो है मेरे हाथ में, इसमें गावा है, कावा जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, और ये अरबी में अपनी ज़ुबान में गावा इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में जो है वो कॉफ़ी। तो ये सबसे पहले जो भी मेहमान आते हैं तो उनको ये इससे खुशामदीद करते हैं। तो अभी बताया कि कॉफ़ी जो है गावा, वो बिल्कुल सीधे हाथ से मेहमान को जो है वो देते हैं, और उनको पहले जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा कहवा देते हैं ताकि बाद में वो फिर तलब उनको हो तो उनको दोबारा दिया जाए। और इसी सूरत में ऐसा भी होता है कि कभी कभार मेहमान को फुल कप कहवा दे देते हैं इनकी कल्चर में,
कि मेहमान को जो है पहले ही फुल कप दे देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से उसको ख़त्म करके वो चला जाए। तो ये कहा है इस वीडियो में। My aunt was like, if you don't take a third cup of coffee, your husband's gonna marry another one. And I'm like, that's a stupid, it's a superstition. I'm not gonna believe in that. And she's like, I'll tell you a story. Your other aunt, she only drank 2 cups of coffee. She went back home and she saw her husband was married to the second person. It's a true story. He was married to a second wife. So I'm just gonna stick with my 1 cup of coffee. Not 2, not 3. That's enough for me. In our majlis, also we break our fast with different meals. We have today some different traditional meals. The first dish that we usually provide, it's called chicken biryani. It's an Indian Pakistani dish, but what we serve for our guests, it's Emirati version of it. It's basically some rice and chicken and boiled egg and some fried potato and different spices. Then we also have some lamb majboos. Majboos is a pure Emirati dish. It's similar to the chicken biryani, but the majboos that we provided is lamb. Then we have lamb margouga. Lamb margouga is basically some bread with a stew, with vegetable, with lamb, all of it mixed together. And then we have chicken madrouba. Madrouba is basically some beans that they beat it in a way until it's come as the shape that you saw it. And they put with it some different sauce, and they put some chicken within the madrouba. Then after that we have the veal haris. Haris is also something that we do it similar to the madrouba. It's some beans, they make it in a way until it's become as the shape that you saw it, and they mix it with some veal and they put some oil on the top of it. And we serve some normal salad, the local salad that we have it in the UAE. And then after that we provide some vegetarian option for the guest. So we have the white rice, we eat it with the vegetable salona or vegetable stew. The white rice is basically some plain rice. And also we provide some vegetable biryani, which is similar to the chicken biryani. ओके गाइस, सो खाना हम लोग का इफ्तार जो है ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर लिया है। हर एक चीज़ मैंने तो तकरीबन चेक की है, कुछ 1-2 चीज़ें जो है वो मैंने नहीं खाई और इट्स लाइक मज़ा आया, काफ़ी डिलीशियस था। स्पेशली जो राइस है उसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त था। और हरीस मेरा जो था ऑल टाइम फेवरेट। और अभी कुछ टाइम देर के बाद हम लोग जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, और पीछे जो है वो लड़के जो है वो। Assalamu alaikum, how are you? Good. What is the game called? This game called Carom. Carom, Yes. Carom board. Okay, Yeah. and what's in Arabic? Carom. Carom, okay, it's same. Alright. So अभी ऑलमोस्ट यहाँ रैप अप टाइम हो चुका है, हम लोग जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। शूज़ वगैरह भी पहनते हैं। तो ये रहा बाहर का नज़ारा, ये एक गली है बिल्कुल, और लाइट जो है वो इस वक्त ऑन चुकी है, अंधेरा है, और बाकी टूरिस्ट जो है वो मस्जिद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। फ़ीमेल जो हैं वो अबाया पहन रही हैं, क्योंकि मस्जिद में आपको पता है कि एहतराम होता है, और मर्दों ने जो है वो जिनके फुल ड्रेस नहीं थे उन्होंने कंदूरा जो था वो पहन लिया। अभी हम लोग आ गए हैं मस्जिद की तरफ, और मस्जिद में मैं तो अभी जाऊंगा पहले वज़ू करके, और फिर मैं नमाज़ पढ़ के, और फिर मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मस्जिद के अंदर। मैं बाहर नमाज़ पढ़ रहा था, तो हम लोग अभी आए हैं मस्जिद में, और मस्जिद में यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे पूछे जाएंगे, और बताएंगे कि मस्जिद में कल्चर क्या है, ड्रेसिंग वगैरह, और क्या क्या चीज़ों का ख्याल हम लोग रखते हैं इमराती कल्चर। We pray 5 times a day. The first prayer starts before the sunrise, and this is the time at the Ramadan where we start to fast. So the first prayer before the sunrise. The second one is on the noon or the mid of the day. The third one, it is the afternoon prayer, and then we have the fourth one, which is on the sunset. At this specific time, we break our fast.
and the last one, it's usually at night. These are the timing of the prayer. Between each prayer and the other, there is a chance of 1 to 1/2 an hour to catch for the prayer, just to make it easier on people. It's more recommended in our religion that to pray at the same time and to pray at the mosque, but not all people they can make it at the same time. So that's why it's a way to make it easier on people. So we still have the 1 hour and 1 hour and a half time to catch the prayer. The direction that we pray to. So when we do our prayers, we have to find the direction of the Kaaba. It's a command from God, but it's something that the Prophet Muhammad kind of started as well. ये रहा मस्जिद के बिल्कुल बाहर का नज़ारा, जो बिल्कुल आबरा के पास ये मस्जिद है, और ये बिल्कुल पुरानी सी कश्ती है उस ज़माने की, जब इन्होंने मतलब कश्ती पे लोग सफ़र किया करते थे। तो हम लोग एक बार फिर वापस इमराती घर में आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने अंदर आते साथ ही कुछ पेंटिंग पे नज़र पड़ी, तो ये पेंटिंग हमने दीवार पे लगी हुई देखी, और फिर उसके बाद हमारे लिए जो है वो मीठे में कुछ जो है वो रखा जा रहा था, डेज़र्ट और मिक्स फ्रूट्स वगैरह। Also, we provide for our guests some dessert. We have some local desserts such as al-gaymat. Al-gaymat is basically the Emirati version of the donut. It's deep fried donut and it's yellow from inside because we use some saffron to make the al-gaymat. We put on the top of it some date syrup. We call it dips in our dialogue. And also we provide some cream caramel and other dessert as well. तो यहाँ पे एक्चुअली मैं खाने में बिल्कुल मसरूफ़ था, और मैंने बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया, मेरी कैमरे की बैटरी जो थी वो बिल्कुल लो हो गई थी। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, ये जो ड्रेस अभी रखने वाली है ब्लू कलर का, ये कह रही थी कि हम लोग ये वाला ड्रेस जो है वो घर पे पहनते हैं, घर के लिए हमारा ये ड्रेस होता है बिल्कुल, और जब हमें कहीं पे बाहर जाना पड़ता है या किसी जगह पे जाना पड़ता है तो हमारे पास मोस्टली जो है वो ब्लैक कलर का अबाया होता है, बुरखा होता है, जो हम पहन के जाते हैं। So we are wearing the national dress. It's called kandura. This dress is also common between the Gulf countries, the Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, and UAE. All the 6 countries in the Gulf, they are almost wearing the same thing. But of course, every different country they have their own name and their own style of making this dress. Our way, we call it, now our dress, we call it kandura, and how we make it special is with the tassel. It's to look like a tie, but actually it's not a tie. We call it farruha. One of the stories, actually one of the oldest stories, they used to say that they used to put some perfume on it to remember their kids and their families when they travel for a very long distance. It's a custom made. We go to the tailor and we choose the fabric, and they made one customized for our body within 2-3 days. तो इसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे एक अरबिक स्टाइल में राइटिंग बड़ी खूबसूरत किस्म का मिस्टर सईद जो है वो अपनी फ़नकारी दिखा रहे हैं, फ़न दिखा रहे हैं इसमें, और बड़ी खूबसूरत से कैलीग्राफी जो है उन्होंने की है। Assalamu alaikum, how are you, sir? Hi, Good. What is your good name? my name is Saeed Shakari. Saeed Shakari, okay. So you're doing here what?
I am doing calligraphy here for the visitors of Muhammad bin Rashid Center for Cultural Understanding. Okay, good. So can you make my name? Sure, definitely. My name is Irfan. Which color do you prefer? And color, choose up to you. What color you like for me? Green is fine. Yeah. Right. Nice. You want to add some edge to it, lines? Lines, you can put, I think it's like dark green or yeah. Mashallah, 3D, huh? That's look very nice. Irfan, huh? Thank you so much. Hi everyone, my name is Adil and I would like to thank you for visiting us in Sheikh Mohammed bin Rashid Center for Cultural Understanding. And I hope you learn about how we break our fast in Ramadan. And I would like to thank Mr. Irfan to visit us and I hope he visits us again. Thank you for coming. See you soon again. ओके गुवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको इमराती कल्चर जो है वो यहाँ पे देखने का मौका मिला। मुझे भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो बाकी जो भी लोग दुबई में रहते हैं तो स्पेशली वो लोग लाजम यहाँ पे शेख मोहम्मद कल्चर ऑफ सेंटर में आएँ और अपना एक्सपीरियंस जो है करें। मेरा इफ्तार का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत अच्छा सा खाना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी बुकिंग करेंगे और आप विज़िट करेंगे ये कल्चर इमराती का। इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।